Hello viewers, I am Tarang Kumar Goonwal, Assistant Professor in St. Andrews Institute of Technology and Management, Gurgaon. The following video is prepared as per the syllabus and course outline of Maharshi Dayanand University. However, there are mostly general topics which cover the working and theoretical aspects of civil engineering. For better understanding and conceptualizing clearly, please do not skip the video and watch till end. We will be discussing about related important questions, feasibility and applications. Let's start the video. Hello students, hello everyone, welcome back. In today's lecture, we will be doing the subject Design of Concrete Structures, which is in 4th semester of Maharishi Dayanand University. And in yesterday's lecture, we discussed about one-way slabs, and in today's session, we will discuss about two-way slabs. So, two-way slabs subjected mostly to uniformly distributed loads resist them primarily by bending about both the axes. तो two-way slab है जो भी उसके ऊपर कोई भी external load है जो कि UDL की फॉर्म में है, दोनों एक्सिस पे बेंड होके, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस जो भी उसकी दोनों ये वाली शेप और ये वाला डायमेंशन दोनों के अबाउट उसको रेजिस्ट करती है. However, as in one-way slab, the depth of the two-way slabs should also be checked for the shear stresses to avoid any reinforcement for shear. पर one-way slab की तरह ही two-way slab में भी जो डेप्थ है, जो d की वैल्यू है, वो भी shear stresses के लिए चेक करने होते ताकि हम shear reinforcement की जरूरत को नेग्लेक्ट कर सकें, ताकि हम shear reinforcement के बिना काम चला सकें. Moreover, these slabs should have sufficient depth for the deflection control. तो इतनी डेप्थ भी होनी चाहिए ताकि डिफ्लेक्शन मिनिमल हो सके. द स्ट्रेंथ एंड डिफ्लेक्शन आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब्स. इसलिए स्ट्रेंथ और डिफ्लेक्शन की जरूरत चेक करने की जरूरत होती है टू वे स्लैब को डिजाइन करने के लिए. सो आई विल जूम इन दिस. All these angles, they are 45 degree when compared to the way they are resting upon the beam, these slabs, and these are strips that show shear. Now first step is, the first topic would be computation of shear force. Shear force are computed following the procedure stated below with reference to figure 2.2. तो जैसा इस फिगर में बताया हुआ है उसी तरीके से shear force हम यहाँ पे calculate करेंगे. The two-way slab of figure 2.2 is divided into two trapezoidal and two triangular zone by drawing lines from each corner at an angle of 45 degree. दो ट्रायंगुलर जोन, ये एक ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल और दो ट्रेपेजॉइडल जोन्स, पहला ट्रेपेजॉइड और दूसरा ट्रेपेजॉइड, और जो जिनमें एंगल 45 डिग्रीज है. द लोड्स ऑफ ट्रायंगुलर सेगमेंट ए विल बी ट्रांसफर्ड टू बीम 1-2. तो ट्रायंगुलर सेगमेंट ए ये है और ये इसका लोड जाएगा बीम 1-2, ये वाली जो बीम है 1-2. एंड द सेम ट्रेपेजॉइडल सेगमेंट बी विल बी बीम 2-3, और इसी तरीके से ट्रेपेजॉइडल सेगमेंट का जो वेट है वो ट्रांसफर होगा बीम 2-3 को. द shear force per unit width of the strips AA and BB are highest at the end of strips. तो shear force per unit width strips AA की और strips BB की हाईएस्ट है इनके एंड्स पे. Moreover, the length of half of the strip BB, तो ये जो लेंथ है इसकी हाफ ऑफ, इस स्ट्रिप की BB की जो हाफ लेंथ है इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिप AA. तो ये जो लेंथ आएगी यहाँ से, ये और इसको हाफ करेंगे तो बराबर आएगा. Moreover,
Thus the shear forces in both strips are equal and we can write, तो इसीलिए shear force दोनों स्ट्रिप्स में बराबर है और हम कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन दे सकते हैं. Vu is equals to W into Lx upon 2, इसीलिए हाफ हो जाता है. Where W is intensity of UDL, the nominal shear stress acting on the slab is then determined from tau V is equals to Vu upon Bd. और नॉमिनल shear stress निकालने के लिए सेम फॉर्मूला जो आप लोग जानते हैं, tau V, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Vu upon Bd से. So next is to compute bending moments. Two-way slabs spanning in two directions at right angles and carrying UDL may be analyzed using any acceptable theory. Peugeot's or Westergaard's theories are the suggested elastic methods, and Johansson's yield line theory is most commonly used in the limit state of collapse method, and it is also suggested by IS 456 as per the note of clause 24.4. And alternatively, annexure D of IS 456 can be employed to determine the bending moments in the two directions for two types of slabs. First, restrained slabs and second, simply supported slab. तो आप लोगों ने देखा कि ये सब थ्योरीज और मेथड्स को यूज करके हम डिजाइन कर सकते हैं. इसके अलावा अगर हम स्लैब्स को दो कंडीशंस में दो तरह से डिवाइड करते हैं, रिस्ट्रेंट स्लैब और सिंपली सपोर्टेड स्लैब, तो आप एनेक्चर डी IS 456 के रेफर करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो द two methods, for first for restrained slab and second for simply supported slab, they are given below. For restrained slab, we'll start. Restrained slabs are those whose corners are prevented from lifting due to effects of torsional moments. तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, तो जो restrained slabs है उनके corners को टक कर दिया जाता है, उसको एकदम फिक्स्ड तरीके से उसको वहां पे अटैच कर दिया जाता है ताकि कोई भी ट्विस्टिंग मोमेंट आए, टॉर्जनल मोमेंट्स आए, तो वो उठे ना साइड से. These torsional moments, however, not computed as the amounts of reinforcements are determined from the computed area to steel due to positive bending moments depending upon the intensity of torsional moments of different corners. पर ये जो टॉर्जनल मोमेंट्स है इनकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम रीइंफोर्समेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं कि रीइंफोर्समेंट का एरिया कितना है, और साथ ही साथ रीइंफोर्समेंट एरिया से हम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, इसलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती है. Thus, it is essential to determine the positive and negative bending moments in two directions of the restrained slabs, depending on various types of panels and the aspect ratio Ly upon Lx. इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स निकालने की जरूरत पड़ती है दोनों डायरेक्शंस में, जो कि हमें इस रेशियो पे आधारित हमें उसकी वैल्यू चेक करनी होती है. So as you can see, this is edge strip. If this is a slab and this is edge strip, this is edge strip, then this strip and this strip, they are restrained so that they can be prevented from lifting. And here, this is edge strip, this is edge strip. These edges are restrained. So as you can see, these values are same. If this is Lx, this is Ly, again Lx, Ly, and for span Lx, you can see it is Lx upon 8, Lx upon 8, 3Lx upon 4, and likewise Ly by 8, Ly by 8, and 3Ly by 4. Restrained slabs are considered as divided into two types of strips in each direction. One middle strip of width of equal to 3/4 of the respective length of span in either directions, and two edge strips, each of it equal to 1/8 of the respective length of span in either direction. जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये Lx Ly by 8 हो जाता है, ये Ly by 8, जो जिस भी डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं उस डायरेक्शन में. तो इसी तरीके से दो एज स्ट्रिप और बीच में मिडिल स्ट्रिप, और सेम उसी तरीके से यहाँ पे. The maximum positive and bending moments per unit width in a slab are determined from these formulas.
x एंड y के लिए mx is equals to alpha x w l x square, and for y it is alpha y w l x square, where alpha x and alpha y are coefficients as given in table 26 IS 456. तो alpha x alpha y की वैल्यू जो ये जो coefficients है टेबल 26 में given है 456 के. Annexure D clause D 1.1, total design load per unit area is W and length of shorter and longer spans are represented by Lx and Ly respectively. The values of alpha x and alpha y given in table 26 of IS 456 are for 9 types of panels having 8 aspect ratio Ly upon Ls from 1 to 2 at an interval of 0.1. तो जो भी Ly by Lx के रेशियोज हैं इसमें Ax और Ay की 9 वैल्यूज दी हुई है 9 टाइप्स के केसेस के लिए, जिसमें कि Ly by Lx वेरी कैसे करता है. Ly by Lx का जो रेशियो होगा उसकी वैल्यू होगी 1, 1.1, 1.2, तो इस तरीके से 2 तक वेरी करता है और टोटल 9 वैल्यूज के लिए अल्फा एक्स अल्फा वाई की अलग अलग वैल्यूज हैं और उन्हीं कोएफिशिएंट्स को हम टेबल 26 से यूज करके इनमें पुट करते हैं. द अबव बेंडिंग मोमेंट्स आर एप्लीकेबल ओनली टू मिडिल स्ट्रिप्स एंड नो रिडिस्ट्रीब्यूशन शैल बी मेड. और ये जिन बेंडिंग मोमेंट्स की हम बात कर रहे हैं they will be applicable to the middle strips only. Tension reinforcing bars for positive and negative maximum moments are to be provided in the respective middle strips in each direction. तो टेंशन reinforcing bars देनी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंट दोनों की कंप्यूटेशन के बाद हर दोनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में भी वाई डायरेक्शन में, मिडिल स्ट्रिप में ही देनी है. So figure below shows the positive and negative coefficients Ax and Ay. So this is the figure. So as you can see, these are negative coefficients. This is negative coefficient and these one are negative coefficients on the edges, and this is in the middle, it is positive coefficient. The edge strips will have reinforcing bars parallel to the edge following the minimum amount as stipulated in IS 456. तो edge strips में भी reinforcement bars होंगे जो जिस edge जो restrained edge है उसके parallel और जो भी minimum percentage of steel होता है उसके formula को use करके हम उसमें provide करेंगे. Next is for the case of simply supported slab. अभी हमने restrained slab के लिए किया, अब हम simply supported slab के लिए बात करेंगे. The maximum moments per unit width of simply supported slab but not having adequate provision to resist torsion at corners and to prevent the corners from lifting are determined from equations 1 and 2. यही जो दो equations हैं, these equations इन्हीं को यूज किया जाता है where alpha x and alpha y are respectively coefficients of moments as given in table 27 of IS 456. तो क्योंकि अभी हम सिंपली सपोर्टेड यूज कर रहे हैं तो सिंपली सपोर्टेड में अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू हमें टेबल 27 से लेनी है, ना कि टेबल 26 से. रिस्ट्रेंट के लिए टेबल 26 से ली थी, सिंपली सपोर्ट के लिए टेबल 27 से, एंड इट इज गिवन इन क्लॉज D2. द नोटेशंस mx my w lx एंड ly आर द सेम एज गिवन इन इक्वेशन. सो जो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सेम उसी की वैल्यू सेम है, उनकी जो एब्रिविएशंस जो नोटेशन है सेम. So next work is detailing of reinforcement. The detailings of reinforcing bars for restrained slabs and simply supported slabs are discussed separately for the bars, either for the maximum positive or negative bending moments or to satisfy the requirements of minimum amount of steel. तो जो भी हमें reinforcement देनी है restrained slab में या simply supported slab में, उसको या तो हम positive और नेगेटिव जो भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा उसको सेटिस्फाई करने के लिए कंसीडर करेंगे, और इन केस अगर उसकी वैल्यू बहुत कम है तो हम जो भी मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टील चाहिए वो कंडीशन सेटिस्फाई करके स्टील प्रोवाइड करेंगे. फॉर रिस्ट्रेंट स्लैब्स, अभी रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है, द मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोमेंट्स पर यूनिट विड्थ ऑफ द स्लैब
कैलकुलेटेड बाय एम्प्लॉइंग इक्वेशन 1 and 2। तो जो जैसा कि आप जानते हैं mx और my की जो इक्वेशन अभी आपने देखी है उनको यूज करके मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट्स पर यूनिट फिट निकल जाएगा एंड दे आर एप्लीकेबल ओनली टू द रेस्पेक्टिव मिडल स्ट्रिप्स। तो मिडल स्ट्रिप्स जो है उसी के लिए एप्लीकेबल है, जैसे कि आप लोग पहले भी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। There shall be no distribution of these moments. The reinforcing bars so calculated from the maximum moments are to be placed satisfying the following stipulations of IS 456। तो जो भी हम reinforcement required as per the positive and negative moments या फिर minimum amount of steel, जो भी हमें reinforcement place करनी है वो IS 456 की कुछ stipulations है उसके हिसाब से place करनी है। एक बार आप ये फिगर देख लीजिए। So this figure shows bar along this direction only LX, as you can see. This is the spacing in terms of LX and LY. Again spacing here. So you can see this shows bar. This shows bars along LY direction only. And these are the notations given to the bars B7, T9, B6, and we will read about them. So these are the conditions, as you can see. Now we will discuss about the stipulations of IS 456, which will describe all these figures. So the first is bottom tension reinforcement bars of midspan in the middle strip shall extend in the lower part of the slab to within 0.25 L of a continuous edge or 0.15 L of a discontinuous edge, and this is as per clause 1.4 annexure D of IS 456। तो बॉटम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट बार्स जो मिड स्पैन पे है मिडिल स्ट्रिप के, वो लोअर पार्ट ऑफ द स्लैब 0.25 L अगर कॉन्टिन्यूस एज है और 0.15 L अगर डिसकॉन्टिन्यूस एज है तो वहां तक जाएंगे, जैसा ये आप देख पा रहे हैं। दोनों केसेस गिवन है। ये बॉटम मोस्ट आप यहाँ पे देख पाते हैं, ये वाले जो बार्स हैं, bar marks B1, B2, B5 and B6 in figure 2.4a and B are these bars। तो B1, B2, B5, B6 वही बार्स हैं। फिगर 2.4 का A, B1, B2, B4 and B5। Here B5 is here। Top tension reinforcement bars over the continuous edges of middle strip shall extend in the upper part of the slab for a distance of 0.15 L from the support, and at least 50% of these bars shall extend a distance of 0.3 L as per clause D 1.5 of IS 456, bar marked as T2, T3, T5 and T6 in figure A and B are these bars। So T2, T3, T5 and T6। You can see T2, T3 in this case
T5 and T6 here, these bars. To resist the negative moment at a discontinuous edge, depending on the degree of fixity, at the edge of the slab, top tension reinforcement bars equal to 50% of that bar provided at midspan shall extend 0.1 L into the span, which is as per again clause 1.6 in annexure D of 456 IS. Bars marked T1 and T4 in figure 2.4 and B are these bars. So T1 और T4 bars. ये वाला बार T1, ये जो बार दिए हैं, ये और ये इसी तरीके से यहाँ पे T4, ये वाला बार और ये वाला बार. The edge strip of each panel shall have reinforcing bars parallel to that edge, satisfying the requirement of minimum reinforcement. The bottom and top bars of the edge strip are explained below. So the bottom bars B3 and B4 in figure 2.4a are parallel to the edge along LX for the edge strip for the span LY. The bottom bars B3 and B4 in 2.4a are parallel to edge along LX. B3, B4. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं B3 बार और B4 बार, ये आप देख पा रहे हैं पैरेलल है. Similarly, bottom bars B7 and B8 are parallel to edge along LY for the edge strips for span LX. So B7 or B8, this is B7 and now this is B8 और आप देख पा रहे हैं कि ये भी इस तरीके से पैरेलल है इस एज के. टॉप बार्स T7 एंड T8, ये आप नोटिफिकेशन से थोड़ा आप लोग भी समझ रहे होंगे. B मतलब बॉटम बार्स, T नोटिफाई कर रहे हैं टॉप बार्स एंड लाइकवाइज. सो टॉप बार्स T7 and T8 in figure 2.4 are parallel to the edge along LX for the edge strip for span LY and satisfy the requirement for minimum amount of steel as per the clause same which we have been discussing. तो बार T7 और T8 देखते हैं 2.4a में. ये देखिए T7 एंड T8 जैसा कि अभी डिस्कस किया था, इस वाले एक्सिस के पैरेलल है. And top bars T9 and T8 are parallel to the edge along LY for edge strip for span LX. तो T9 और T10 पैरेलल है LY के. T9 और T10 ये पैरेलल है इधर. तो ये तो रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग थी रिस्ट्रेंट स्लैब्स की. सिंपली सपोर्टेड स्लैब्स के बारे में देख जानते हैं. तो आप एक बार इसको पॉज करके क्रिएट कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं अपने नोटबुक्स में या किसी भी फॉर्म में. तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ से इसको एक सेक्शन भी कट करा हुआ है, सेक्शन 2 ये यहाँ से सेक्शन कट करके दिखाया हुआ है. ये स्लैब पोर्शन है, ये सपोर्टिंग बीम्स हैं, ये टॉप व्यू है सेक्शन का जो स्लैब है हमारी. ये इन्होंने यहाँ से सेक्शन 1 कट करा हुआ है, इसका व्यू ये दिखाया हुआ है. बाकी ये सब बार्स हैं जिनके बारे में भी हम जानेंगे. So these are simply supported two-way slabs with corners not held down, जैसा कि हमने डिस्कस किया. इसमें कॉर्नर को रिस्ट्रेन नहीं किया जाता.
So this figure 2.5A, B and C, this and this. So first is plan and the rest two are sections. Represent detailing of reinforcing bars of simply supported slabs not having adequate provision to resist torsion at corners and to prevent corners from lifting. तो जो इन फिगर्स में reinforcing bars हैं simply supported slab के, उनमें इस torsion को resist करने के लिए enough provision नहीं दिया जाता reinforcing bars का, ताकि जो corners है वो उठे ना. Clause 2.1 in Annexure D of IS 456 only stipulates that 50% of the tension reinforcement provided at midspan should extend to the supports by remaining 50%. The remaining 50% should extend to within 0.1 Lx or 0.1 Ly of the support as appropriate. So, clause D 2.1 के हिसाब से 50% जो टेंशन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं मिड स्पैन में, वो सपोर्ट्स के अंदर तक जाने चाहिए, और जो रिमेनिंग 50% है, जो आधी रीइंफोर्समेंट बची है, जो लेंथ उनकी जो बची हुई है, वो 0.1 Lx या 0.1 Ly लंबाई तक सपोर्ट के अंदर जानी चाहिए ताकि प्रॉपर बॉन्डिंग हो पाए. Now we'll move to a numerical on two-way slab. So the question is this: design a reinforced concrete slab for a room which measures 5 meter by 6 meter size. The slab is simply supported on all the four edges with corners held down and carries a superimposed load of 3 kilonewton per meter inclusive of floor finish, etc. We have to use M20 grade of concrete and Fe415 grade of steel. तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे इसका. First step would be computation of loading and bending moment. From deflection point of view, L by D is equal to 20. For simply supported span, let us assume percentage of steel as 0.2% for under reinforced section. Hence, from figure 4 of IS 456, we get modification factor as 1.68. तो इस PT के लिए हम modification factor वैल्यू ले लेंगे ये. So, if अगर हम इसको multiply करें इस factor को modification factor से, so 20 into 1.68 will give 33.6. ये modification factor के cases में problem discuss कर चुके हैं. So, the value of D would be Ly 33.6 and value of L as given is 5 meters. The room is of 5 meter, so it will be 5,000. So it becomes 148.8 mm. We will provide 20 mm nominal cover and 8 mm dia bars. So the overall depth would be 148 plus 20 mm, and this will be the additional. Hence, we can assume an overall depth of 180 mm for safer side for the purpose of computing dead load. The way we found out the weight of slab, the self weight of slab, we will do it in the same fashion. So this becomes 0.18 multiplied by 1 meter in both directions, and it will be multiplied by the unit characteristic weight. So it becomes 4.5 kilonewton per meter square. Superimposed load is given as 3 kilonewton per meter square, so it becomes 3 kilonewton per meter square. And total load, if we add these two, it becomes 7.5 kilonewton per meter square. And after multiplying it with factor of safety, partial factor of safety, we get 11.25 kilonewton per meter square. So if we take effective depth of 150 mm small d, so this means that cover has been taken as 30 mm.
So if this is the effective depth, that means the value of Ly, that is in y direction, effectively would be 6 meter, because it is 6 meter span. If we add this value, it will become 6.15, and in and Lx effective would be 5 plus 0.15, it would be 5.15. Therefore Lx upon Ly would be 1.2, which is less than 2. So from table 27 of IS 456, and why we are using table 27, because it is given as simply supported, and if it would have been given as a restrained beam, then we would have used table 26 of 456 IS. From table 27 we get value of alpha x and alpha y as 0.02, 0.072 and 0.056. So for mx and my we get values as this. Substituting all the values, alpha x is 0.072, w we got 11.25, and Lx square is 5.15 square. And likewise, we'll put the value in my. The value of mux and muy comes out to be 21.483 kilonewton meter and 16.709 kilonewton meter respectively. And we have also discussed it in the diagram itself. For short span, width of middle strip, जो छोटा वाला span है उसकी middle strip की width कितनी होगी, 3/4 of Ly. So 3/4 multiplied by 6.15, it gives 4.61 meter. Width of edge strip would be half of 6.15 minus this value, जो भी remnant होगी, then it becomes 0.77 meters. For long span, width of middle strip would be 3.4 times of Lx, so it becomes 3.87 meters. Width of edge strip would be half of, again, 5.15 minus this value, it becomes 0.64 meter. Now we have to compute effective depth and total depth. It is given by this formula: small d is equals to under root of mx ultimate moment for x direction divided by rub. This value is so the value this, substituting all the values here, the value of Ru for M20 and Fe415 is a constant. It is 2.761 from IS code, and the effective value of D comes out to be 88.2 meter. However, from requirement deflection, we will keep the value of D as 180 only. Therefore, D would be, effective depth would be 180 minus cover minus 4, so it is 156 mm, and that for long span, it would be D minus this value minus 8. For short span, this is 156, and for effective cover for long span would be, effective depth for long span would be 148 mm. Now the next step is to compute steel reinforcement for short span. It is given by area of steel under tension for X, that is shorter span, and it is given by the formula 0.5 FCK upon Fy multiplied by 1 minus under root 1 minus 4.6 M. Ultimate moment in x direction mux upon FCK BD square into BD, and all these constant, all these values are known, and we will substitute the values here, and the area of steel in x direction will be given as 405.2 mm square. So we will provide a spacing of 8 mm for this value, and it becomes 124.7 mm. So this is for 8 mm die bar. So we will use 8 mm die bars at 120 mm cc. It comes out to be 124 mm. So we will, on the conservative side, we use at 120 mm cc for middle strip, which is of width 4.61 mm, which we have just found out, and edge strip of length 0.77 meter. The reinforcement in edge strip would be given by this
0.12 into 180 by 1000 upon 100, which is 216 mm. So on the conservative side, we will provide us, on non-conservative side, in the edge strip, we will provide spacing of 225 mm CC to CC, center to center of 8 mm die bars. For steel in long span, using the same formula, but we will use the value of MUY here, and we get it as 327.9 mm square. Spacing of 8 mm bars. Again, the value of SY here would be 153.4, using the same formula. And we will provide 8 mm bars at 150 mm center to center for middle strip of 3.87 meter. For edge strip of width 0.64 meter, AST comes out to be 216 mm. Hence, provide spacing 8 mm at 225 center to center. So this has been rounded off to 225 center to center spacing again. Now torsional reinforcement at corner. Size of torsion mesh should be Lx upon 5. Lx is 5.15. So the value is 1.03 meter from center of support, or 1.03 plus 0.8, which is 1.1 from the edge of slab. The area of torsional reinforcement will be given by 3 by 4 times of area of cylinder tension in next direction, and it comes out to be 3 by 4 into 403.2, and it comes out to be 302.4 mm square. So the required spacing would be 8 mm at 160 mm. In the similar fashion we did it here, and we provide a spacing of 8 mm at 150 mm CC. This is the required and this is the provided. So we are done with two-way slab and done with today's lecture as well. We will meet in the next session. Till then, have a great time. Thank you. I hope you guys could understand and correlate the topics taught in today's session. If there is any query or subject matter issue, feel free to mail me at the given email ID. Live discussion sessions could also be used for discussion of doubts.